Okay. So good morning everybody. We'll continue with the topic precedent. Under precedent, we'll be discussing veto power of the president. What do you understand by veto power? Veto power. Not extra, basically. It is not extra power. Bill is to be given assent. So there's nothing like extra. It is something like this, power related to the bills, wherein president can either assent it or withhold it or send it for reconsideration or any other thing. Okay, and what kind of veto? Then veto is mostly something like to stop something. Okay, in P5 nations, UN में, there is something called veto power. वहाँ पे भी veto power है. Why we want P5 status? So that अगर कुछ होता है, अगर उसमें से एक कंट्री भी इसको रोकती है, तो वो चीज वीटो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुकना पड़ता है. ओके, सो very important, veto power. So I made you write certain things that what are the actions that the president can take with respect to the bill. Okay, and under that, what are the powers and what all things can the president do with respect to bills. Okay, withhold the bill, reconsideration. All kind of bills can be sent for reconsideration except money bills. ठीक है. Then why veto power is given to the president? Did I discuss this? What were the reasons? Yes, Shweta. This is not the reason. आप mentally prepare हो गए, मैम को बोल देंगे रिवाइज नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा? Yes, Kanika. Kanika, why veto power is given to the president? मत बोलना कि रिवाइज नहीं किया. बताओ. पढ़ के बताओगे. अब तो उसको रेफर, जो याद आ रहा है वो समझ के बताओ. कनिका, पूरा पूरा पढ़ के क्या मतलब, एटलीस्ट कुछ रेफरेंस मिला, वही बताओ. क्या उस दिन का जो भी याद, मैंने क्या समझाया था? वन इज टू प्रिवेंट एनी हेस्टी डिसीजन. हो सकता है पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन जल्दी में लिया हो, उसको रोकना पड़ सकता है. ऑफ कोर्स, नहीं तो बिल तो पास हो जाएगा, और हो सकता है वो बिल बिना डिबेट डिस्कशन के गया हो. वो देखा है ना आपने, बस पास करना है. तो प्रेसिडेंट के पास कोई तो होना चाहिए जो इस चीज को देखे, अरे ये तो बहुत हेस्टी में पास हुआ है, लेट्स स्टॉप इट. ठीक है. दूसरा, हो सकता है कोई बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. Why I'm talking about president here? Because a parliament consists of three things: Lok Sabha, Rajya Sabha and president. क्यों? क्योंकि कोई बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उसके प्रेसिडेंट असेंट नहीं करते, साइन नहीं करते. रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई veto power is so important. ठीक है. हो सकता है लोकसभा राज्यसभा ने ढंग से डिबेट डिस्कशन किया ही ना हो, बिल पेश कर दिया प्रेसिडेंट के सामने. अगर ये मैंडेटरी होता, नहीं प्रेसिडेंट तो साइन ही करेगा, तो क्या होता? गड़बड़ हो सकती थी. तो कोई एक पावर होनी चाहिए जो उसको रोक सके. नो, दिस इज इल कंसिडर्ड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज टू हेस्टी, दिस इज विदाउट डिबेट्स एंड डिस्कशंस. Getting this part? Now let's talk about what are the types of veto that are mentioned. Types of veto. Types. First is absolute veto. And there are not all these vetoes are there with the President of India. But we'll understand what these vetoes. Suspensive veto. Then qualified veto. Pocket veto. So these are the types of veto. Okay, absolute, suspensive, qualified and pocket. Clear? लिख लो सब लोग. 4 types of veto. We are discussing veto power.
Okay, under veto power, we have started with types of veto. एक नोट लिख लो, नोट. अब इसमें से जो है 3 टाइप्स की वीटो प्रेसिडेंट के पास है. एक है एब्सोल्यूट, एक है सस्पेंसिव, एक है पॉकेट. देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो विद द इंडियन प्रेसिडेंट. स्पेशल नोट लिख लो, नोट. ओनली एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो पावर. ओनली एब्सोल्यूट, suspensive and pocket veto power is with the Indian president. ठीक है, write down, लिख लिया. Adam, I'll explain each and every term. Okay, there's no provision for qualified veto. There is no provision, लिख लो, there is no provision for qualified veto. There is no provision for qualified veto. लिख लिया. Unlike US president that has all 4 veto powers. US president के पास ये चारों है. Unlike US president that has all 4 veto powers. सबसे पहला जो वीटो है, कौन सा वीटो है? एब्सोल्यूट वीटो. Absolute veto is that veto power wherein president withholds the assent to that bill. And let me tell you, that bill ends there. It never becomes an act. Strong power है ना. लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उस पर विदहोल्ड कर दिया प्रेसिडेंट ने, और वो बिल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है. एटलीस्ट उस टाइम के लिए, तो उस सेशन में जो भी है इट एंड्स. बात अलग है कि वो दोबारा रीइंट्रोड्यूस हो लेटर स्टेज, बट दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वीटो बोला. एब्सोल्यूट कोई चीज कब होती है? जो वो पावरफुल हो, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट वीटो. क्लियर है? राइट डाउन एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है. Withholding the assent to the bill passed by the parliament. Absolute veto means, स्वजल समझ में आ रहा है? बिल पे लोकसभा राज्यसभा ने पास कर लिया, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के पास चला गया. राष्ट्रपति ने कहा मैं साइन विदहोल्ड, मतलब किया ही नहीं साइन. अब क्या होगा? क्या चीज बेटा? बेटा वहां पे देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. हम बहुत सारी चीजें आप देखोगे बहुत डिफरेंटली वर्क करती है. देयर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. हाँ पूरी तरीके से, यस. नहीं, अभी उसमें हम बात करेंगे. वो देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है, उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं, और वहां पे भी वीटो पावर भैया अल्टीमेटली इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वहां पे तो जनरल पब्लिक ही करती है. इंडियन प्रेसिडेंट की तरह नहीं है चीजें वहां पे. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट व्हेन अभी आप, अच्छा आप इसमें बीसीए में हो, एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में. देयर यू स्टडी द एंटायर यूएस स्ट्रक्चर, यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो उसमें आपको बहुत सारे, मतलब देयर आर नुआंस टू इट, तो योर ऑटोमेटिकली योर क्वेश्चन विल बी आंसर. बट इफ आई स्टार्ट आंसरिंग दैट, विल शिफ्ट टू यूएस सिस्टम. ठीक है, हम अभी इंडियन पे फोकस कर रहे हैं. राइट डाउन. ये लिख लिया एब्सोल्यूट वीटो. हाँ लिख लिया डेफिनेशन, लिखो. Withholding the assent to the bill passed by the parliament and then the bill ends and never becomes an act. तो ये तो खत्म हो गया वो absolute veto, and then the bill ends and never becomes an act.
अब ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैम ये जो एब्सोल्यूट वीटो है, क्या ये हर बिल पे जा सकता है? नो, इट्स नॉट ऑल द बिल्स। जैसे पता है आपको कुछ चीजें मनी बिल्स के केस में चीजें डिफरेंट होती हैं, ये जो बिल है वो भी, इसमें भी वो बिल जो कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है वहां पे हम एब्सोल्यूट वीटो यूज करना। हुआ प्राइवेट मेंबर्स, नॉट अस, हम नहीं। जो मिनिस्टर नहीं है, जो कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं कर रहे, उनको हम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे एंड प्रेसिडेंट को समझ में नहीं, हो पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, ही कैन withhold his assent to such a bill, right? ठीक है, not all bills can go for absolute veto. President cannot opt कि नहीं इस ये बिल आया है और इस पे एब्सोल्यूट वीटो कर दे, नहीं, उस हर बिल पे नहीं हो सकता है। एक बिल है जिसपे हो सकता है, वो है प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल समझ में आ रहा है ना? वो पर्सन, वो एमपी जो मेंबर, जो मिनिस्टर नहीं है, राइट डाउन, केसेस में एब्सोल्यूट वीटो कैन बी अप्लाइड। और एक और कंडीशन है, मैं बताऊंगी वो कब एब्सोल्यूट वीटो हो सकता है। पहला लिख लो, ये लिखो, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट बिल, with respect to private members of the parliament, or with respect to bill presented by private member of parliament, with respect to bill presented by private member of parliament, ब्रैकेट में लिख लो, लिख लिया इतना, with respect to bills presented by private members of parliament, ब्रैकेट में लिख लो, bills introduced by any member of parliament who is not a minister। नहीं नहीं, उसी में उसका एक्सप्लेनेशन लिखवा रही हूँ ना मैं, ये पहले ही टाइप लिखवाया है मैंने। अच्छा, ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन लिखवाया है मैंने, ये लिख लिया, विद रिस्पेक्ट टू बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विद रिस्पेक्ट टू बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ब्रैकेट में लिखो, बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम ले लो तो मिनिस्टर नहीं है बट एमपी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो अगर इनमें से कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं पास करने लायक नहीं है, कैन विथहोल्ड द बिल, या एक्ट बनने लायक नहीं है, वट एवर बी द रीजन। क्लियर? सेकेंड केस, ऐसे केस में एब्सोल्यूट वीटो, लिसन हियर, second case, in what kind of case can absolute veto be done? If a government has बिल पास हो गया है, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है, मतलब एक तरह से मिनिस्टर ने ओके कर दिया है, बट कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। सुनो, कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और राष्ट्रपति का अभी तक उस बिल पे असेंट नहीं हुआ, रिजाइन हो गया। अगर रिजाइन नहीं होता और वो साइन हो जाता, वो तो एक्ट बन जाता, लेकिन बिल के साइन होने से पहले कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे बिल पे भी एब्सोल्युटली हो सकता है। ऑफ कोर्स भाई, आप एज अ गवर्नमेंट आपने प्रेजेंट किया था, बाउट, चलो ठीक है, प्रेसिडेंट उसको असेंट भी दे देते, लेकिन उससे पहले कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, तो क्या मतलब है, अब नई गवर्नमेंट आएगी, नया तरीके से बिल लाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? क्या मतलब है ऐसे बिल को पास करने का जब कैबिनेट ने रिजाइन ही कर दिया? रिजाइन कर दिया मतलब अब नई गवर्नमेंट आएगी, अब नई गवर्नमेंट के लिए थोड़ा वो बिल पास करेंगे, वो तो जब नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर से मेहनत करे पूरी, या चेंज करे बिल को, वट एवर, या पास कर, हो सकता है उसको ना पास करवाना हो ये बिल। Getting this point, so then the president can use absolute veto. Write down, when government, in case of government bills where cabinet resigns, in case of government bills, so ये आ सकता है, can president use absolute veto in government bills? आपको exceptional case पता होना चाहिए, not in all cases, especially when cabinet resigns, तब government will go। मैं बता रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, पूरा लिखो इसको पहले, गवर्नमेंट बिल्स वे कैबिनेट रिजाइंस, ब्रैकेट में लिख लो, आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल बट बिफोर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, when cabinet resigns, in case of government bills when cabinet resigns,
रेजिग्नेशन जरूरी है, ठीक है। और वो हाँ, अगर मैं आप क्या पूछ रहे थे कि वो क्या, नहीं नहीं, फिर देखो नए कैबिनेट पे डिपेंड करेगी चीज कि इसको फर्दर रीइंट्रोडक्शन कराना है नहीं कराना है, तभी होगा। फुल कैबिनेट, कैबिनेट ने सिर्फ मिनिस्टर के रिजाइन से नहीं, कैबिनेट ने रिजाइन किया, तभी मैंने वर्ड कैबिनेट लिखवाया है, ठीक है। आफ्टर द पैसेज बट बिफोर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लिखो, ऑल्सो न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज असेंट टू सच अ बिल। अब ये किस तरह से एंड होता है, सी विदहोल्ड हो गया बिकॉज अभी देखो बिल चल रहा है, ठीक है, बिल का एक स्टेप हो गया, हो सकता है न्यू जो गवर्नमेंट आ रही है उसको हो सकता है समझ आ जाए ये बिल, सोचा हम क्यों पूरी मेहनत करें दोबारा से, वी कैन हैव दिस बिल, देन हो सकता है इफ दे आर ओके विद इट इट विल बी साइन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पुरानी गवर्नमेंट की बिल होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉर्मल केसेस में न्यू गवर्नमेंट कभी भी उसको पास नहीं करवाती है, क्रेडिट कौन देगा, बात यू नो दैट कि नॉर्मली जो होती है न्यू गवर्नमेंट ओल्ड गवर्नमेंट की स्कीम्स है इन सबको कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आती है, सो दैट द क्रेडिट इज नॉट गिवन वेयर इट्स ड्यू। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कुछ स्कीम्स कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब नई गवर्नमेंट आती है तो चीजें इधर से उधर होती चेंज होती हैं, हो सकता है रीपैकेज ही हो सकता है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल ही हो, बट दिस इज डन, ठीक है। राइट डाउन, ऑल्सो न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज असेंट टू सच अ बिल, लिख लिया, ब्रैकेट में लिखो फॉर द एक्सप्लेनेशन, व्हेन द करंट, थर्ड पॉइंट नहीं लिखवा रही हूं मैं किसी को, ऑल्सो न्यू कैबिनेट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, ये सेकेंड पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन लिखवा रही हूं मैं आप लोगों को, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ दो ही काइंड ऑफ कंडीशंस हैं। ऑल्सो न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज असेंट टू सच अ बिल, ब्रैकेट में लिखो, when the current cabinet or current government passes a bill and then resigns, the new government resigns, इसका पूरा explanation लिख लो, a bill and then resigns just when it is sent to the president, just when it is sent to the president, comma, that bill will be withheld, that bill will be withheld, लिख लिया, that bill will be withheld, and then the next government can see, and then the next government can see if they agree with the bill, and then the next government will see if they agree with the bill. In such a case, president will sign the bill. अगर अग्री करेगी नई गवर्नमेंट बोलती नहीं ठीक है ये बिल बढ़िया है अब साइन करो, तो प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, बट इफ द न्यू गवर्नमेंट disagrees or advises president not to sign it, president will not sign it. So लिख लो, if the new government disagrees or advises president not to sign it, then the president will not sign it. हरीशा मुझे सुनो, try understand what I'm saying and then write. मैंने समझा दिया है उसको, आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो. Try developing that habit of writing it in your own words. Is it clear? Absolute veto समझ में आ गया था हमने स्वजल? Absolute veto क्या है? Absolute veto स्वजल लाउडर, तेज से आवाज आनी चाहिए यहां तक.
मुझे सिर्फ अपने शब्दों में समझा दो। ये तो मुझे कंडीशन बता रहे हो, मुझे सिर्फ बताओ एब्सोल्यूट वीटो होता क्या है। यस अनीशा, लाउडर। which is not signed with withheld or signed not, so that is what absolute veto is। उसमें दो कंडीशन है, एब्सोल्यूट वीटो हम कहाँ दे सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। क्लियर है एब्सोल्यूट वीटो। स्वजल, साइन विदहेल्ड करना और वो बिल समाप्त हो जाता है जब राष्ट्रपति उस पे साइन नहीं करे, ऐसे तरीके को जहां पे बिल खत्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और दो ही कंडीशन में यूज होता है, या तो प्राइवेट मेंबर बिल हो या पुरानी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया सिग्नेचर से पहले, तो राष्ट्रपति उसको साइन कर सकता है, नहीं भी कर सकता। साइन तब करेगा जब नई गवर्नमेंट अग्री करेगी, जब नई गवर्नमेंट डिसअग्री करेगी साइन नहीं करेगा तो वो अपने आप वो बिल खत्म हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो है इंडियन प्रेसिडेंट के पास। नाउ सस्पेंसिव वीटो होता है सस्पेंड। सस्पेंसिव क्या होता है? व्हेन यू से सस्पेंड, सस्पेंड ये वहां से आया, ये सस्पेंसिव वाला थी आया है, सस्पेंस से आया है सस्पेंसिव। क्या होता है? सस्पेंड टेम्पररी होता है पर, यस एग्जैक्टली द की वर्ड इज टेम्पररी। तो सस्पेंसिव वीटो वो होता है जब कोई बिल आया और राष्ट्रपति ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। रिकंसिडरेशन तब करने को भेजे जब थोड़ा डिसअग्री कर रहे राष्ट्रपति, तभी तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे। लेकिन अगर वो दोबारा आ जाता है बिल साइन करना पड़ता है। लेकिन वो टेम्पररी हॉल्ट मिला ना, बस उसी को सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। मतलब अ टेम्पररी हॉल्ट, चाहे वो रिकंसिडरेशन के थ्रू वो हॉल्ट मिल गया हो, क्योंकि जब तक रिकंसिडर होगा तब उतने दिन तो गैप मिलेगा ना। गेटिंग दिस पॉइंट, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। समझ में आ रहा है? अ टेम्पररी हॉल्ट थ्रू द बिल। राइट डाउन। President suspensive, the president exercises this veto when he returns the bill for reconsideration to the parliament. When he returns the bill for reconsideration to the parliament. लिख लिया? क्या हो गया? फोन, full stop. However, if the bill is again passed by the parliament, however, comma, if the bill is again passed by the parliament, with or without amendments, with or without amendments, and is presented again to the president, with or without amendments, and is again presented to the president, then it's mandatory for the president, to give his assent to the bill. Vinita, we are discussing types of vetoes. Under that, we have already discussed one, that is absolute veto. Okay, there are 4 kinds of veto, but there are only 3 that are available with Indian precedent. And those 3 are absolute, suspensive, and last one, pocket veto. There is no qualified veto. Then qualified veto किसके पास है? US president के पास ये चारों है, but Indian president के पास only 3 है. This is one thing I've explained. Absolute veto क्या होता है? Wherein the president completely withholds the assent to the bill
and that bill ends. That is absolute veto. Absolute veto सिर्फ दो केस में दिया जाता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोस कंडीशंस आप लिख लेना. एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, दैट इज वो बिल जो कोई भी एमपी पास कर रहा है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं. ठीक है, सो दोस टू कंडीशंस यू रिवाइज, लिख लेना, छोड़ देना स्पेस. एंड देन आई हैव स्टार्टेड द सस्पेंसिव वीटो. सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? अ टेम्पररी हॉल्ट. दैट इज अ बिल व्हेन इट इज सेंट फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट. तो एक हॉल्ट मिला ना, विदहोल्ड किया ना एसेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट इज डिसएग्रीइंग टू दैट बिल, इसीलिए रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है. लेकिन यू नो, वंस द बिल इज अगेन comes back to the president, president needs to sign it. तो वो जो टेम्पररी हॉल्ट है उसको सस्पेंसिव बोलते हैं. लेकिन एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट एंड, बट यहाँ पे टेम्पररी एंड. गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ तक हुआ है. नोट लिखो, एक नोट, सिंपल नोट में लिखवाने वाली हूँ कि एक केस में आप रिकंसिडरेशन के लिए बिल नहीं भेज सकते. वो कौन सा केस है? मनी बिल. राइट डाउन. इन केस ऑफ मनी बिल, in case of money bill, comma, president can either give his assent to the money bill or withhold his assent to the money bill. President can either give his assent to the money bill or withhold his assent to the money bill. But he cannot return it for reconsideration. But he cannot return it for reconsideration to the parliament. But he cannot return it for reconsideration to the parliament. Actually, normally money bill के केस में, let me tell you, president normally gives assent to the bill. अब रीजन ये है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर होता है. आप परमिशन ले रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अग्री हो रहा है. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में मनी बिल इज गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट. राइट डाउन. Why it is not sent for reconsideration? उसमें लिखा है it's because normally it is introduced. It's because normally it is introduced in the parliament with the prior permission of the president. With the prior permission of the president. And so he gives assent to the bill. And so he gives his assent to the bill. अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा यूएस प्रेसिडेंट के केस में और इंडियन प्रेसिडेंट के केस में. विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द वीटो व्हिच इज देयर विद इंडियन प्रेसिडेंट. दो तो हमें पता है, सस्पेंसिव हो गया एंड एब्सोल्यूट हो गया. थर्ड दैट इज अवेलेबल विद इंडियन प्रेसिडेंट इज पॉकेट वीटो. राइट डाउन, पॉकेट वीटो. इन दिस केस एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है प्रेसिडेंट ना ही साइन करते हैं, ठीक है, ना ही पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं, बट उसको ही कीप्स इट विद हिम फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. और वो पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है कि वो बिल अपने पास कब तक रखेंगे. ओके, सो राइट डाउन. इसीलिए उसको पॉकेट बोलते, पॉकेट में डाल के रख लिया, रखा है, पॉकेट में रखा है और ना किसी के पास जा रहा है. सो इन दिस केस द प्रेसिडेंट नीदर रैटिफाइज. In this case, the president neither ratifies nor rejects nor returns the bill. Reject भी नहीं किया कि पूरी तरीके से मना कर दिया, और return भी नहीं कर रहे. Ratifies nor rejects nor returns the bill. बोलते ना कई बस ऐसा कोई कमेंट करना होता है, उसने तो अपने पॉकेट में रख लिया है, ना किसी को दे रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है, ना एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, returns the bill, nor rejects nor returns the bill, but simply keeps the bill. But simply keeps the bill pending for an indefinite period.
ब्रैकेट में लिख लो, नो स्पेसिफिक पीरियड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेम. नो स्पेसिफिक पीरियड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेम. कि वो कितने दिन तक अपने पास रखेंगे ये बात मेंशन नहीं है. लेकिन मैं बताऊं यूएस प्रेसिडेंट के केस में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है. यूएस प्रेसिडेंट कैन कीप इट मैक्सिमम फॉर 10 days. तो ऐसा बोला जाता है कि द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ द यूएस. ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट लिखो, देन राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट इसी में. दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट टू टेक एनी एक्शन, this power of the president to not to take any action on the bill is known as pocket veto. Action on the bill is known as pocket veto. यही बात है, देखो आप रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, एक तरह से आप न्यूट्रल रहना चाह रहे हो. होता है ना, एक्शन ही नहीं लिया. बोले जब क्या राष्ट्रपति ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, मना भी नहीं किया. एक्सेप्ट किया कि नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया. तो क्या किया, बस रखा हुआ है. ब्लेम भी नहीं आ रहा है कि हमने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, so this is a neutral action, you can say this is a kind, pocket veto is a kind of neutral action. Now write down as a comparison, bracket में लिख लो, note लिख लो, whereas the US president has to take an action within 10 days, has to take an action within 10 days. Comma, where he could return the bill for reconsideration, where he could return the bill for reconsideration, and then again when the bill is sent, and then again when the bill is sent, and then again when the bill is sent, president has to sign it. ये तो पता है आपको, president has to sign it. Another note लिख लो, pocket of Indian president, another note, pocket of Indian president क्या है, is bigger than the US president, because वहां पे indefinite है, यहाँ पे defined है, 10 days के अंदर action लेना है. One more note, write down. Another note. Remember, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वहां पे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं होती. वेरी इंपॉर्टेंट. इज देयर एनी वीटो पावर विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? नो. ये स्टेटमेंट आ सकता है दैट देयर इज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर इज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, देयर इज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल. सो 2 and 3 आर राइट. यस है, चाहे वो कोई भी वीटो हो, बट है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में वीटो नहीं है. सो राइट डाउन, प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर in respect of constitutional amendment bill. The president has no veto power in respect of constitutional amendment bill. And this was made obligatory. And this was made obligatory. This was made obligatory by 24th Constitutional Amendment Act 1971. And this was made obligatory by 24th Constitutional Amendment Act CAA 1971. ठीक है, ये तो हो गया अभी तक यूनियन लेजिस्लेशन के ऊपर कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है वीटो की. नाउ विल टॉक अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन. क्या उस पर कोई वीटो हो सकता है? सो विल टॉक अबाउट दैट. प्रेसिडेंशियल वीटो, हेडिंग डाल लो, प्रेसिडेंशियल वीटो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन. हम बात करेंगे, अभी पहले इस पे बात कर लेते हैं. दैट ऑल्सो विल टॉक. प्रेसिडेंशियल वीटो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन.
Write down. A bill passed, heading लिख ली. A bill passed by state legislature can become an act if it receives assent of governor or president. मैम प्रेसिडेंट कब साइन करेगा? ये तो गवर्नर के पास जाएगा ना. अगर गवर्नर ने कोई रिजर्व कर दिया है कि प्रेसिडेंट इसको कंसिडर करेंगे तो उस केस में प्रेसिडेंट. ओके, सो राइट डाउन. प्रेसिडेंट के केस में ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली व्हेन गवर्नर रिजर्व्स द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन. Only when governor reserves the bill for president's reconsideration. Clear? Now write out. Again, governor has four alternatives. Governor has four alternatives with respect to bills passed by state legislature. Passed by state legislature. अच्छा, ये जो है with respect to governor's assent, that is mentioned under article 200. ब्रैकेट में लिख लो article 200. अब मुझे कौन बताएगा क्या है चार तरीके what governor can do with respect to a state legislation? ठीक है, एक तो हो गया assent दे देगा, दूसरा withhold, तीसरा नहीं, तो चौथा हो गया, तीसरा क्या होगा? हाँ, ये डाउटफुल क्यों प्रियांशी? कॉन्फिडेंटली बोलो मैम रिटर्न द बिल फॉर. मैम डाउटफुल. और चौथा है आपका रिजर्व. सो राइट डाउन व्हाट आर द फोर वेज. नंबर वन, he may give, governor may give assent to the bill. He may give his assent. दूसरा, withhold his assent to the bill. Withhold his assent to the bill. Third, return the bill. Return the bill, bracket में लिख लो, which bill cannot be returned? Not a money bill. Return the bill, bracket, not a money bill, for reconsideration of state legislature. For reconsideration of state legislature. Of state legislature. And fourth क्या होगा? May reserve the bill for consideration of president. For the president, reconsideration of the president. अब लास्ट इससे विल वाइंड अप विद दिस गवर्नर वाला थिंग. ये तो हो गया मैम रिजर्व हो गया. अब रिजर्व के बाद क्या, अगर हम चौथी कंडीशन की बात करें, तीन कंडीशन तो गवर्नर तक तो लिमिटेड हो गई, ठीक है, विदहोल्ड कर लिया, असेंट कर दिया, ये रिटर्न कर दिया. बट अगर रिजर्व हुआ तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल की भी बात करी जाए. राइट डाउन. What president will do when a bill is reserved by the governor? What president will do when a bill is reserved by the governor? Is reserved by the governor for his consideration. For his consideration.
इसमें again there are three alternatives. There are three alternatives and this is mentioned under Article 201. ठीक है, Article 2 तो गवर्नर के असेंट की बात हो रही 200 में, और अगर बिल रिजर्व हो रही है 201 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट. दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 201. फर्स्ट क्या होगा? he may give his assent to the bill. पहले लिख लो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, he may give assent to the bill. दूसरा, he may withhold the assent to the bill. He may withhold his assent to the bill. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें नॉर्मल रिकंसिडरेशन से चीजें डिफरेंट है. थर्ड क्या है? अगेन ही विल आस्क द गवर्नर टू रिटर्न इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर. यहां तक तो ठीक था. यूनियन लेजिस्लेशन के केस में अगर वो वापस प्रेसिडेंट के पास आता है बिल, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है. लेकिन अगर इस केस में स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा वापस करती है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन इट. दिस इज द डिफरेंस between state legislation, a bill reserved for president's consideration, reconsideration again in state legislature, not bound, but in union, reconsideration के बाद दोबारा आता है तो साइन करना पड़ता है. So write down third, he may ask the governor to return the bill. समझ में आया अदम? यूनियन के केस में रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा आ रहा है तो साइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेशन के बाद स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा राष्ट्रपति को वापस कर रहा है तो साइन करना नहीं पड़ेगा. He may ask the governor to return the bill, of course not money bill, for reconsideration of state legislature. Shweta, clear है ये बात? For reconsideration of state legislature, full stop. ये चौथा ही इसमें सॉरी 3 कंडीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड. नहीं, 201 में यही बातें लिखी हुई. ठीक है, तो राइट डाउन, if this bill is again passed by the state legislature, एक्चुअली इसके पीछे ये रीजन है ना बेटा कि जरूरत ही नहीं पड़ रही है उसकी. ये जो आप जो थर्ड ऑप्शन मिल गया ना राष्ट्रपति को कि साइन करने की जरूरत ही, तो आप ये उसको वैसे ही मान सकते हो. क्या मतलब? तो हो गया ना वो, फिर उसका तो काम ही हो गया, गवर्नर ने साइन कर दिया है तो वो तो ऑप्शन है गवर्नर के पास कि अगर वो चाहे. एंड नॉर्मली उस केस में करते हैं जहां पे पता है कि बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, गवर्नर अपने लेवल पे इसको डिसाइड नहीं कर सकता है. वैसे ही बिल, हर बिल थोड़ा रिजर्व करेगा गवर्नर, तो गवर्नर के पास पावर ही क्या रहेगी. ओनली एक्सेप्शनल बिल्स आर रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, so write down, if this bill is again passed by the state legislature with or without amendments, and is again presented to the president, for his assent, then president is not bound को underline कर दो, then president is not bound to give his assent to the bill. इसका मतलब क्या है? This means that state legislature, write down, this means that state legislature cannot override the veto power of the president. This means that state legislature cannot override the veto power of the president.
अब यहाँ पे अदम्यता का एक क्वेरी आंसर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉकेट वीटो वाला। अब इसको आप पॉकेट वीटो मान सकते हो, कैसे? क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। आप कंपेयर कर सकते हो, हाँ, कि इट इज अ काइंड ऑफ पॉकेट वीटो, क्योंकि अगर टाइम पीरियड मेंशन कर दिया होता तो अलग चीज हो जाती, पर यहाँ पे टाइम मेंशन तो उसी तरह का है जैसे पॉकेट वीटो में था। विद, यू डोंट कंपेयर इट विद यूएस प्रेसिडेंट, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंपेयर इट विद इंडियन प्रेसिडेंट हो, तो उस केस में ये उस टाइप का पॉकेट वीटो हो सकता है। सो राइट डाउन अ नोट, the constitution hasn't prescribed the constitution hasn't prescribed any time limit, any time within which the president has to take an action, within which president has to take an action over a bill reserved by the governor, has to take an action over a bill reserved by the governor for his consideration, for his consideration. And so president can exercise pocket veto. And so president can exercise pocket veto. ठीक है? And so president can exercise pocket veto. लास्ट में वो जो एक क्वालिफाइड वीटो रह गया था हमारा, वो एक बार कर लो आप लोग। अदम्य क्वालिफाइड वीटो आप पूछ रहे थे, ये ऑफ कोर्स इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बट आप लोग समझ लो क्या होता है पॉकेट वीटो, सॉरी क्वालिफाइड वीटो, राइट डाउन क्वालिफाइड वीटो क्या होता है। A qualified veto is a veto that can be overridden by the legislature. A qualified veto is a veto that can be overridden by the legislature with a special majority. इसलिए मैंने इसको कराया नहीं, बिकॉज उतना ज्यादा हाई, बिकॉज अगेन इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट डाउन, इन अदर वर्ड्स executive rejects a bill, executive rejects the bill, ठीक है? तो प्रेसिडेंट एक तरह से एग्जीक्यूटिव, ही इज रिजेक्ट, बट लेजिस्लेचर स्टिल हैज पावर, still has power to pass it again with a higher majority. मतलब प्रेसिडेंट ने एक तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दोबारा जो है लेजिस्लेचर उसको पास करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा हुआ है इन यूएस, बराक ओबामा एंड डोनाल्ड ट्रम्प tried passing a bill, sorry, rejected a bill, but it was being overridden by the Congress. कांग्रेस ने उसको ओवरराइड करने की कोशिश करी, ठीक है? बट दिस काइंड ऑफ पावर इज नॉट देयर विद द इंडियन प्रेसिडेंट, सो क्वालिफाइड वीटो इज नॉट देयर, सो दिस इज क्वालिफाइड वीटो। ओके, आप चाहे एग्जाम्पल में लिख लेना कि there were bills that have been rejected or vetoed, you can say qualified veto given by the president Barack Obama and then, but Congress tried to override it. Okay, so that is all for the day. Thank you. We'll continue in the next class. Okay, and in that we'll cover ordinance making power, and with that we'll wind up this